Anant National University hosted two significant international events: the International Conference on Indigenous Knowledge Systems and Practices, Designing Sustainable Futures, and the third edition of WITH Festival, led by Provost Dr. Anunaya Chaubey and Dr. Rajendra Singh, the Waterman of India, who is the Professor of Practice at Anant University. The conference featured keynotes by Professor Sonajharia Minz and Professor Rishi Narain Singh, focusing on integrating indigenous knowledge into sustainable solutions. The third edition of the WITH Festival, themed Borderless Global Indigenous Futures, showcased indigenous storytelling through contemporary media. Delegates from 18 countries across 5 continents participated in the international conference, which highlighted Anant's commitment to sustainability and cultural preservation. The WITH Festival showcased diverse performances from Kashmiri folk artists, a skateboarder-rapper from Madhya Pradesh, a rock fusion band from Meghalaya, and artists from Majuli, Assam. Through workshops and interactive sessions, the event fostered dialogue between tradition and contemporary innovation. Earlier, Santosh Zokarkar welcomed the speakers and delegates at the press meet. Stay tuned for glimpses from today's media interaction at Anant National University, brought to you by Bilkul Online. अनंत विश्वविद्यालय में इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम का जो एक सेंटर बना है उसका चेयर और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम के साथ युवा विद्यार्थियों को कैसे देश भर में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकें। उनके मन में अब तक जो वो डिज़ाइन पढ़ रहे हैं उस डिज़ाइन में एक और इनोवेटिव डिज़ाइन जो हमारे कॉमन फ्यूचर को बेहतर बना सकता है, जो हमारे जीवन में जो हमारा मूल सिद्धांत है भारतीय ज्ञानतंत्र का सनातनता, चरे वेति आदि अनंतः, जो हमेशा चलता रहता है, बिगड़ता नहीं है। आज जो बहुत कुछ बिगड़ गया है जलवायु परिवर्तन के कारण, उस सब का समाधान खोजने का डिज़ाइन और अनंत विश्वविद्यालय में कोशिश हुई है। उस कोशिश को इन्होंने एक अच्छा काम ये किया है कि देश भर में जहाँ भी इस तरह के प्रयास हो रहे हैं और उन प्रयासों ने धरती को, प्रकृति को सनातनता प्रदान की है, पुनर्जनन किया है, रिजुविनेशन किया है, उसकी एक किताब का आज उन्होंने विमोचन किया अपनी यूनिवर्सिटी में। इस किताब में बहुत सारे आपको अनुभव देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे कि जहाँ लोगों ने, कम्युनिटी ने अपने डिज़ाइन से अपने आप को ठीक कर लिया। ये जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन अब पूरी दुनिया को ज़रूरत है। पूरी दुनिया में अब यही डिज़ाइन चलेगा जिससे रिजुविनेशन होता है। अभी तक हम विकास पढ़ते थे, अब हम रिजुविनेशन पढ़ेंगे, क्योंकि विकास ने हमारी बुद्धि का विस्थापन किया है, हमारा बिगाड़ किया है और एक तरह से बहुत हम बाढ़ और सुखाड़ के विनाश की तरफ बढ़ गए। उसको रोकने के लिए अब हमें विकास की जगह ये रिजुविनेशन आना पड़ेगा, रिजुनेट करना पड़ेगा अपने नेचर को, रिजुनेट करना पड़ेगा ह्यूमैनिटी को, रिजुनेट करना पड़ेगा ऑल लाइफ को। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि हमारे वीसी साहब जो यहाँ के प्रोवोस्ट हैं वो आपको इसके बारे में आगे बताएंगे कि हमारा जो ये कल्पना है इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो ये है कि पूरी दुनिया में जहाँ भी इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम के सेंटर रहे हैं, उनके जो विजडम कीपर हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। 18 कंट्रीज के 5 कॉन्टिनेंट के विजडम कीपर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मुझे लगता है कि वो अनंत विश्वविद्यालय से सीखेंगे और अनंत विश्वविद्यालय उनसे सीखेगा। ये सीखने का दौर एक तरफा नहीं होता, ये सीखने का दौर एक दूसरे के साथ बराबरी से होता है। इसलिए ये जो दुनिया के लोग अनंत विश्वविद्यालय में आए हैं,
अनंत राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में आएंगे वो भी सीख के जाएंगे कि हम किस तरह से अपनी अगली पीढ़ी को, युवाओं को इस काम के साथ जोड़ रहे हैं और हम भी उनसे कुछ सीखेंगे। बस मुझे इतना ही कहना था। So, speaking about design, which I think Anant has brought in a big way for Gujarat and for India. So today we have this conference. So can you please elaborate on that and how design is picking up in India, and what do you think where we are lacking? So design is a discipline which integrates within it humanities, science and technology, and knowledge of commerce to sustain the startups or entrepreneurship that designers often get into after they finish with their design education. It's a mega discipline, and but there are obstacles and challenges in the way, and the first of course is for a designer to really use all the resources, all the information or data that he can or she can get from diverse, eclectic sources, should include indigenous knowledge systems. Quite often, and since a long time, and we have seen it, indigenous knowledge system has often been regarded as something which is superstitious, a system which is not based on science. That's what the understanding is. But it's a system which has profound scientific basis, and we are trying to make an effort in incorporating indigenous knowledge system, integrating these systems with contemporary science and technology, include it in the curriculum that the students can benefit from. And what it's going to do is make sure that going forward, solutions that we have towards development are sustainable. They are green and not damaging to our environment. Therefore, it's very important that for green design, for problem solving potential that design has, we include in our curriculum the knowledge system that we have considered, that we look at as being indigenous or local or traditional. So how many delegates have arrived here today? So in all we have around 56 delegates. There are 18 countries that are represented here, and they bring together such diverse perspectives as a spiritual outlook on existence, on life, with material, scientific, technological approaches, to indigenous knowledge systems and their practices as well. And regarding education system, where does the design stand today, and what are the demands that you are, as the VC of this university, putting forth? Yeah, so there has been a situation, and it continues to be there with most of the institutions, that design is a niche discipline. It has to do with creativity alone, right? And the schools know nothing about it. Parents know nothing about what design is. They think design is only about beautification and ornamentation. And we have a different understanding of what design is. We look at design for what it really is and what it does. And that is, design as a discipline that helps young students acquire skills in creativity, in critical thinking, in problem solving. Design is a mega discipline. That's what I keep saying. It requires a designer to understand the society, identify challenges and problems, which requires for a student to know the humanities, sociology, the politics, history, philosophy. You need to look at your society from all these lenses. Then you identify problems, and identifying the problem would require the next step, which is solving the problem, for which you would need science and technology. And the third step is, once you have found a solution, you have the option to set up your own startup, set up your own venture. So instead of a job seeker, you become a job creator, right? But in order for you to do this, you require knowledge of commerce. So it's a mega discipline, and the sooner we introduce it, at a higher secondary level as an option for the students, apart from humanities, science and commerce, the better it will be, because the world now needs
problem solvers from the younger generation who in 10 years time would be solving these problems, or in 5 years time would be in a position to solve some of these, address some of these problems at least, before it really goes out of control and worsens. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जादव बड़ा। मैं माजुली उत्तर कमलाबाड़ी सत्र असम से आ रहा हूँ। मैं असम का जो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी है वहाँ का भी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ, और मेरा हमारी एक सत्रीय आर्टिस्ट दल आ रहा है। तीर्थ भैया बोल गए, हमारी सत्र का सेक्रेटरी भी है, और हमारी सारा आर्टिस्ट भी हम लोग आ रहा है। ये जो सत्रीय ट्रेडिशन, सत्रीय जो पारंपरिक जो स्थिति, ये 14th-15th सेंचुरी में महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने शुरू किया था न्यू वैष्णवाइट मूवमेंट से, और वो मूवमेंट से ही हमारी जो क्षत्रिय संस्कृति का जो भाव जो जितना हमारे साथ है, भक्ति और आध्यात्मिकता के साथ जुड़ा है। इसीलिए शंकरदेव ने उनका जो प्रिय शिष्य माधवदेव, उनका जो प्रिय शिष्य बदला पद्माता ने हमारी जो कमलाबाड़ी सत्र, उत्तर कमलाबाड़ी सत्र, उनको 1673 में उन्होंने प्रतिष्ठा किया था। और वो सत्र इंस्टीट्यूशन है एक एज लाइक मॉडल यूनिवर्सिटी, एज लाइक मॉडल एजुकेशनल लर्निंग सिस्टम, गुरु शिष्य परंपराओं से ये सीख रहा है। हमारी जो बात है, ये जो ग्लोबल को बात कर रहा है, हमारी जो 30 में जो संकट आ रहा है, ये संकट को हम लोग सिखाने के लिए हमारी जो परंपरा है, हमारी जो आध्यात्मिकता है, हमारी जो भक्ति है, उनके साथ हम लोग काम करने के लिए हमारी जो नया पीढ़ी है, हमारी अनंत राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने हम लोग को माजुली से यहाँ हमको आमंत्रित किया था। हम लोग ये भी कोशिश करूँगा इस यूनिवर्सिटी में हम लोग हमारी जो क्षत्रिय संस्कृति का जो परंपरा है, हमारी जो म्यूजिक के साथ हो, थिएटर के साथ हो, आध्यात्मिकता के साथ हो, भक्ति के साथ है, ये हमारी जो नया पीढ़ी है यहाँ का, उन लोग के साथ हम लोग बैठकर जो आध्यात्मिकता को हम लोग कैसे ले जाएंगे, हमारी जो पीस होना है, हम लोग पूरा आध्यात्मिकता से हम लोग शक्तिशाली बनना है, इस तरह से हम लोग ये क्लाइमेट चेंज करना पड़ेगा। क्लाइमेट सब कुछ साफ चेंज करने के लिए आध्यात्मिकता हमारी बहुत इम्पोर्टेंट बात है हमारी लाइफ से। इसीलिए हमारी जो तरीका है, क्षत्रिय डांस है, म्यूजिक है, थिएटर है, एक्सरसाइज डांस है, उसका कल माती अखड़ा है, 64 नंबर से माती अखड़ा है, 64 कलाओं से जुड़ा है, 64 कलाओं से डिज़ाइन है, अलग अलग डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने परफॉर्मिंग आर्ट से ये जुड़ा है। इसीलिए हम लोग चाहता हूँ अनंत राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से हम लोग उत्तर कमलाबाड़ी सत्र हम लोग कोशिश करूँगा, दोनों इंस्टीट्यूशन हम लोग यहाँ का जो विद्यार्थी है, यहाँ का जो माहौल है, हमारे सत्र इंस्टीट्यूशन का जो माहौल है, हम लोग इकट्ठा होकर कैसे हम लोग का यहाँ का क्लाइमेट, कैसे हम लोग भक्ति के आध्यात्मिकताओं के साथ हम लोग यहाँ आकर, और यहाँ का जो विद्यार्थी हमारी माजुली वो पूरा पीस एरिया है, नेचुरल एरिया है, नो पोल्यूशन, वहाँ स्टूडेंट को हम लोग वहाँ लेकर कैसे ये हमारी भक्त लोग कैसे जी रहा है, कैसे गुरु शिष्य परंपरा सीख रहा है, कैसे हमारी पारंपरिक वहाँ चल रहा है 500 साल से, वो हम लोग एक साथ मिलकर काम करने के लिए हम लोग कोशिश करूँगा। Right. Es importante que nos situemos como seres. Vamos a hacer un diseño interno propio y un diseño de la tierra. It is important that we can locate ourselves as beings. So let us first begin by doing an inner design for ourselves and then an outer design for the earth. En este encuentro que tuvimos, Kiva Family habla del encuentro de todas las visiones de todo el globo terrestre. In this gathering or encounter we have with the Kiva family, it talks about gathering together all the different visions of all the different traditions globally to meet together in harmony. Y cómo todos ellos y cada uno tienen relación con los 4 elementos. And how each one of them
is having or keeping a relationship with the four elements: tierra, fuego, agua y aire. earth, fire, water, and air. Y hay un quinto elemento que es esa conexión entre todo lo que existe, que es como lo invisible y mágico, elemento que ha construido el misterio de la vida. And there is a fifth element, there is the connection between everything that exists, that has built everything and is connecting the magic of life. Nuestro abuelo aquí al lado, Alfonso, él tiene su nombre en su lengua, pero en español hubo que ponerle el nombre para que el mundo actual se comprendiera uno con otro. Por ejemplo, our elder here, for example, he has an own name in his own native tongue. But for us to understand and to be able to address him, he has received a name in Spanish. ¿cómo es tu nombre, abuelo? Yo me llamo Emitor, me llamo Chikaveri Yuitakane. So that is his name in his native language, but we address him as Alfonso. Con español, Alfonso González Velázquez. So can you see the difference in Spanish, Alfonso González Velázquez, but before it was his name in his native language. Él es un ejemplo de esta integral relación entre lo espiritual, lo material, la ciencia y la conciencia. So he is a living example of this integration between the spiritual and the material, the science and consciousness. Cuando empezamos este encuentro global, hubo necesidad de generarle un documento. When we started with this global encounter of the Kiva, there was a need to generate some identification document for him.